Hello friends, welcome back. This is a ninth video lecture on the Constitution of India, and today's topic is Preamble and some landmark cases on Preamble. Students should not struggle by studying in random order, so cover the topic in serial order. The question is, what is the preamble of the Constitution of India? Preamble is introductory part of the Constitution. It states that the Constitution derives its authority from the people of India. It declares India as socialist, sovereign, secular, and democratic. It gives justice, liberty, equality, and fraternity as objectives of the Constitution. जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हमें बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है. द प्रियम्बल हैज बीन कॉल्ड पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय K.M. मुंशी. इट हैज बीन कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ठाकुरदास भार्गव. इट हैज बीन कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय N.A. पलखीवाला. The next question that we cover is, why is preamble called the heart and soul of Indian Constitution? And the answer is that B.R. Ambedkar called Article 32 of Indian Constitution, that is the right of constitutional remedies, as the heart and soul of the Constitution. The preamble is called the soul of the Constitution because it provides a short summary of all that is there in the Constitution. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट जो है वो एक प्रकार का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहलाता है क्योंकि वह एक शॉर्ट समरी में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है. थर्ड क्वेश्चन, हु सेड प्रियम्बल इज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज इट्स आइडेंटिटी कार्ड सेड बाय N.A. Palkhiwala. We already covered that. And Thakurdas Bhargav stated that wise words, preamble is the key of the constitution. So ठाकुरदार भार्गव ने कहा था कि preamble जो है वह constitution की चाबी है. He referred the preamble as the soul of the constitution as it proclaimed the solemn resolution of Indian people to constitute India into a sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तथा उन्होंने प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा था क्योंकि यह भारत के लोगों को उनके सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने के बारे में बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड प्रियम्बल? एंड द आंसर इज, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू on 13th December 1946 and passed by the Constituent Assembly. So we can say the preamble was introduced by Jawaharlal Nehru. And the next question is, the right to ensure a republican or democratic form of government किसको कहते हैं? It is the preamble which says that India is democratic and republic. इसको सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क केस में भी कहा था, that is in केशव नंदा भारती केस. It was held that democratic and republican form of government form part of basic structure of the constitution and thus cannot be amended. इसको हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे. Next important question, is preamble of the Constitution of India enforceable? And the answer is, the preamble of a constitution is part of the constitution but it is not enforceable by courts. इसी से related important question, is preamble of the Constitution of India justifiable? And the answer is, the preamble is non-justifiable. This means that the courts cannot pass orders against the government of India to implement the ideas of the preamble. I hope it is very clear now कि preamble की बातों को implement करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. Who prepared preamble of the Constitution of India? We already covered Pandit Jawaharlal Nehru. And is it borrowed?
Yes, it is borrowed from USA. Then somebody can ask, why the preamble of a constitution important? The preamble to a constitution serves two purposes. It indicates the source from which the constitution gets its authority, that is the people of India. And it also states the objects which the constitution seeks to establish and promote. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कहते हैं प्रीएम्बल को एनफोर्स नहीं कर सकते, हम उसको लागू नहीं करवा सकते, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोर्स बताता है कि ये लोगों द्वारा लागू किया गया है और इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. Another question which is generally asked is preamble law? Preamble is an introduction to the highest law of the land, but it is not the law. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है लेकिन लॉ नहीं है. Next question comes, what is the original preamble of Indian Constitution? Presently there are 85 words in the preamble of Indian Constitution, but before 1976 there were only 83 words in the preamble. The word socialist and secular was incorporated in the preamble by 42nd Amendment Act 1976. So I hope it is very clear that originally preamble में socialist और secular word नहीं था. इसको 1976 की 42nd Amendment के बाद ऐड किया गया था. बड़ी ही कॉमन ट्रिक है टू रिमेंबर द कंटेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, दैट इज SSDR. SSS डॉक्टर कह सकते हैं. ये SSS क्या है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर. DR क्या है? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. एंड नॉट टू फॉरगेट द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंट्रोड्यूस्ड in 42nd Amendment Act of 1976. Second thing to remember in the preamble is JLIF, not leaf but LIF. JLEF, that is justice, liberty, equality and fraternity. What is the preamble of the Constitution of India? अब as per the original words of the preamble cover करते हैं. Preamble में लिखा है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice. किस बात की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की जस्टिस. और लिबर्टी देते हैं किस चीज की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी देते हैं किस चीज की? इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. और फर्टिनिटी. Fraternity क्या है? Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity means a group of people sharing a common profession or interest. Fraternity को brotherhood भी कहते हैं. So the election process is also considered to be a fraternity because a group of people wants that kind of government that they think of. Next हमारे preamble में दिया गया है, in a constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, अडॉप्ट करते हैं और इसको एनेक्ट करते हैं, मतलब लागू करते हैं. अब प्रीएम्बल में दिए गए SSDR को डिटेल में कवर कर लेते हैं. सोवरन, जो भी देश पूरी तरह से आजाद होता है उसे सोवरन कहते हैं. It means supreme or independent. The country is both internally as well as externally sovereign. Externally it is free from any foreign power and internally it exercises a free government directly elected by the people and make law that govern the people. अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट डायरेक्टली नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल है, जैसे कि वहां पे डेमोक्रेसी ना हो, डिक्टेटरशिप हो, तो उसको जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि वो सोवरन नहीं है. वह भी सोवरन है, आजाद है. इट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन. नेक्स्ट, सोशलिस्ट. सबसे पहले तो इस चीज को हम याद कर लें कि द वर्ड वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ये बार बार क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमारे प्रीएम्बल में पहले ये वर्ड नहीं था, इसे बाद में डाला गया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस थिंग. इट इम्प्लाइज टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ये इसलिए डाला गया था क्योंकि हम अपनी कंट्री इंडिया को
सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी देना चाहते थे। किनको देना चाहते थे? द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को। सोशल इक्वालिटी मीन्स दैट देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू ट्रीट देम इक्वली। लोग आपस में अभी इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर, दैट इज अमंग द पीपल। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश एजुकेटेड होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, ये चीज भी कम होती जा रही है। ईच वन enjoys equal status and opportunities. By economic equality, it means that the government will endeavor for equal distribution of wealth and to provide a decent standard of living for all. Hence, a commitment in forming a welfare state. अब इकोनॉमिक इक्वालिटी से बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा। तभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी अब रिजर्वेशन डाल दी गई है और उनके लिए भी अलग से रहने का इंतजाम किया जाता है, जैसे फ्लैट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनकी आय बहुत कम है, सो दैट इवन दे कैन हैव अ डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। आगे इसमें यह भी आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड जमींदारी। अनटचेबिलिटी तो खत्म हो गई है, लेकिन एक पंगे वाली बात है, जमींदारी सिस्टम को भी अबॉलिश किया गया। यहां पे हम इंपॉर्टेंट केसेस कवर करेंगे कि इसके खिलाफ प्रीएम्बल को चैलेंज किया गया था कि इट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि जमींदार लोग जो थे वह अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहते थे, वेदर इट वॉज टेकन बाय लीगल और इलीगल मीन्स। द इक्वल वेज एक्ट एंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट वर फ्यू स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये सब चीजें भी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट की निशानियां हैं। सो वी कैन कवर दैट दीज थिंग्स आर डन बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलर। इस वर्ड को भी हम सुनते ही याद कर लें कि ये पहले नहीं था। द वर्ड वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd Amendment Act of 1976. Secular implies equality of all religion and religious tolerance. No state in India have an official state religion. Anybody can preach, practice and propagate any religion of his or her choice. In the eyes of law, all citizens are equal irrespective of their religious beliefs. No religious instruction is imparted in government schools or government aided schools. So secular definitely means मतलब भारत का जो रहने वाला है वह कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है जो वो चाहे, लेकिन गवर्नमेंट स्पेशली किसी के ऊपर कोई चीज लागू नहीं करेगी, किसी को प्रेफरेंस नहीं करेगी या किसी को इग्नोर नहीं करेगी। सो दिस इज व्हाट बेसिकली सेक्युलर मीन्स। देन कम्स द वर्ड डेमोक्रेटिक। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट of all levels are elected by the people through a system of universal adult franchise. Definitely democratic का मतलब ही यही होता है कि वोट के द्वारा, लोगों द्वारा चूज की हुई गवर्नमेंट। Every citizen, irrespective of caste, creed, color, sex, religion or education, who is 18 years of age and above is entitled to vote if not debarred by law. बस 18 साल के ऊपर होना चाहिए और गवर्नमेंट द्वारा बैन नहीं किया होना चाहिए कि वो वोट नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को वोट देके अपनी पसंद की सरकार बनाने का हक है। सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेटिक मींस। रिपब्लिक, द टर्म मींस दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। वो देश रिपब्लिक होते हैं जिसका जो हेड होता है वह लोगों द्वारा चुना गया है। This is the President of India is elected by the Electoral College for a fixed period of 5 years. उसको रिपब्लिक कहा जाता है। Now we come to the main question. Is preamble part of the Constitution? इस सवाल को कई बार सुप्रीम कोर्ट तक उठाया गया। ये कौन से केसेस थे? बेरूबरी केस, केशव नंदा भारती केस, चरण लाल साहू केस एंड SR बोमाई केस। The first time this question was raised in Berubari Union and Exchange of Enclaves in Re case AIR 1960. Gajendra Gadkar was the Chief Justice at the time. This case was in actual a presidential reference under Article 143, Sub-Article 1 of the Constitution, and it was decided by 8-judge bench. In this case, the Supreme Court held that the preamble is not a part of the Constitution. However, in next, that is Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala, AIR 1973 Supreme Court 1461,
Justice Sikri was at the time, and this was one of the biggest bench, that is 13 judge bench. The Supreme Court held that preamble is part of the constitution, and thereafter there was no challenge to it. So in this case, the Supreme Court overturned its own decision taken in Reburi case and decided that preamble is a part of the constitution. इसके बाद इसको चैलेंज नहीं किया गया था. In SR Bommai versus Union of India, AIR 1994, Supreme Court 215. This was judgment by a 9-judge bench, and Supreme Court held that preamble forms part of the constitution. SR Bommai जो है is the most quoted verdict in the country's political history. इस केस की डिटेल को हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेना जरूरी है कि इट वॉज इन रिगार्ड टू द एमरजेंसी प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 356, वेयर द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हिज रूल ओवर अ स्टेट. Now the question comes, can the preamble be amended? As we have already covered an important case, that is Keshav Nanda Bharti versus State of Kerala, AIR 1973, Supreme Court 1461, and Justice Sikri had delivered the judgment. In this case, the Supreme Court held that the preamble is a part of the Constitution. It could be amended like any other provisions of the Constitution under Article 368, subject to the condition that basic features in the preamble cannot be amended. इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमको कि preamble जो है वो Constitution का पार्ट तो है, लेकिन इसके बेसिक फीचर को अमेंड नहीं किया जा सकता. The edifice of a constitution is based upon the basic element mentioned in the preamble. If any of these elements are removed, the structure cannot survive, and it will not be the same constitution, or it cannot maintain its identity. So the answer to the question, can preamble be amended, is partly yes, that yes, it can be amended, but partly no, that its basic structure cannot be amended. Before I come back again, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बड़ों को रिस्पेक्ट दें और छोटों को प्यार. I guarantee your life will be filled with happiness.